सो गाइस वेलकम बैक टू एज बिजनेस 9609 क्लासेस। हमारे पास ये जो क्लास है ऑफ एस लेवल दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, हमारे पास वी आर डन विद द लीडरशिप लीडरशिप स्टाइल्स। हमारे पास थे वी आर डन विद द लीडरशिप थ्योरी एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लीडरशिप स्टाइल। तो जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने वहाँ पे जो मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स है थ्योरी वाई वो हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द कॉन्सेप्ट द लास्ट मैनेजमेंट एरिया ऑफ द एचआरएम। मोटिवेशन के बाद हमारे पास ये जो मैनेजमेंट का एरिया होता है इसके अंदर लास्ट हमारे पास जो एरिया है वो हम कवर करेंगे। सो बेसिकली इट्स ऑफ 2 क्लासेस और इसके बाद हमारे पास ये मैनेजमेंट वाला एरिया ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना और मैनेजमेंट का जो टॉपिक है हमारे पास ये थ्रू आउट योर लाइफ इट इज वेरी ड्राई। मतलब ड्राई का मतलब ये है कि वी हैव थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी, कोई एग्जांपल्स एज सच हमारे पास केस स्टडीज एंड ऑल नहीं है। तो थ्रू आउट योर लाइफ चाहे वो आपके ए लेवल्स हो चाहे वो आपके बैचलर्स हो मास्टर्स हो, आपके पास मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना वो थियोरेटिकल है। तो आज जरा इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू ऑल आर स्टूडेंट्स, सो यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। आप लोगों ने कोई ऑफिस में एज अ जॉब काम नहीं किया हुआ, यू हैवंट वर्क एनी इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस में बैंक्स में काम नहीं किया हुआ। बट वन पर्टिकुलर interaction you have with the management is it's of school, whether it's of school or the college। तो ये जो स्कूल की मैनेजमेंट होती है हमारे पास, कॉलेज की मैनेजमेंट होती है, ये भी हमारे पास एक मैनेजमेंट है। एंड व्हेन यू लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल और कॉलेज, वो क्या करती है, वो टीचर्स को हायर करती है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स को जो है वो कंट्रोल करती है, टीचर्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है, इवेंट्स कंडक्ट करवाती है। सो व्हाट इज दिस, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उनके ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और लेट सपोज अगर आप देखें कि ये मैनेजमेंट नहीं हो हमारे पास, ये कुछ इंडिविजुअल्स जो टॉप लेवल पे ऑपरेट करते हैं और वो मैनेजरियल रोल्स परफॉर्म करते हैं, इफ दे डू नॉट परफॉर्म दीज फंक्शंस, तो एक स्कूल है उसके अंदर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। सो हाउ द हायरिंग ऑफ द टीचर्स विल टेक प्लेस, how the control on the students and the teachers performance will take place, who is going to conduct the events, who is going to make the schedules, who is going to arrange the classes, who is going to allocate the classes and the timetable, ये सारे के सारे functions किसके हैं, मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैनेजमेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है एंड द मैनेजमेंट इज इनइफेक्टिव, it means that management is not performing the functions effectively, there is no control, there is leniency, there is no check and balance, there is no control on the workers, students. So do you think that particular school or a college is going to succeed, whether the college is going to bring out the results? No। तो हमारे पास वी हैव एन एग्जांपल कि मैनेजमेंट इज लाइक अ ड्राइवर इन द कार। कि लेट सपोज यू हैव अ कार but you do not have the driving skills or you do not have any driver, so that particular car is useless। क्योंकि गाड़ी को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर कार, तो दैट कार इज नॉट प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू यू, रिसोर्स है बट रिसोर्स इज गेटिंग वेस्ट। तो सिंपली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हैव द लेबर, वी हैव द फाइनेंस, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, but there is no management, so who is going to organize, who is going to control? So management is like a driver in the car. If you have the driver or the driving skills, so now you can utilize the benefit of the car. So similarly in an organization, when you have the resources, when you have the labor, finance and all the resources that are required, but there is no management in an organization, so the resources will be wasted and there will be no efficient utilization of the resources. So that's why management is important in an organization। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास पेपर 1 सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन द सेक्शन ए अबाउट डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, इफ देयर इज अ क्वेश्चन डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट फॉर 2 marks, तो इसका मतलब क्या है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज, के स्टैंड्स फॉर द नॉलेज। So, for example, if there is a question, define the term management, the K stands for the knowledge. Examiner is actually commanding you to write down the definition, define. So now a student or a candidate must have the complete understanding and knowledge of the management, and the person or the candidate must know the appropriate sound or the full definition of the term management. So how you are going to define what is management? Management is a
systematic approach of organizing and controlling the resources of an organization to achieve the objectives efficiently and effectively. So this is known as a sound full definition that completely defines the concept of the term management. The management is a systematic approach of organizing and controlling the resources of an organization in order to achieve the objectives of the organization efficiently and effectively. So let's suppose if there is no management in an organization, so the organization is not going to achieve the objectives. And we have the number of examples. Businesses do fail because of the poor managerial skills. It's known as one of the cause of the business failure. So हमारे पास lack of finance, amount of competition, losses, ये तो सारे हैं. लेकिन internally, if there is poor managerial skills or the management is ineffective, so the business cannot achieve its objective, and in the long run the business is going to fail. So management plays a key role in the success and in the operations of the business. So ये हमारे पास term हो गई management की define कि we have the complete understanding and knowledge of the term management. Now heading towards हमारे पास कि we have a concept that we need to understand. अब ये आपके पास एक particular pyramid है और it is known as the hierarchy. Now we need to understand कि how many levels of the management in an organization are there. So you must know that there are different levels of management, and this is known as one of the thing. I hope that you are familiar with it. If you are not familiar with the levels of the management, I'm going to explain you because I'm here. भाई है तो मैं आपको समझाऊंगा. सही है? तो आ जाएं. सबसे पहले हमारे पास the top level of the management is known as senior management of an organization. और जो senior management of an organization है, it is comprised of board of directors. Now, who are known as the board of directors? The executives of the company. CEO, HR director, finance director, marketing director, operation director. तो जितने भी executives होते हैं and the chairmen होते हैं, they actually make up the board of directors and the senior management of an organization. So the senior management of an organization is comprised of the executives and the board of directors. And these board of directors are known as the strategists. They are involved in the long-term planning of the business, long-term growth, future growth plans. बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सेकंड हमारे पास जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इट इज नोन एज मिडिल मैनेजमेंट. And the middle management is comprised of head of departments. Now, who are known as the head of the departments? Head of the departments are known as the functional managers. Now, who are known as the functional managers? Functional managers are known as the HR manager, finance manager, marketing manager. These are known as the head of the departments. और ये जो functional managers होते हैं ना basically हमारे पास they perform the departmental responsibilities. For example, HR manager is responsible to lead the HR workers, recruitment plans, workforce plan. Marketing manager is responsible for the marketing budget, marketing plan. So, ये departmental responsibilities हैं, they are actually performed and they are actually undertaken by these head of the departments. Then we have the third level of management, and the third level of management is known as junior management of an organization. And the junior management is actually comprised of subordinates or the supervisors who are directly working under these managers. ये जो head of departments के under लोग काम कर रहे होते हैं. Let's take an example. HR manager के under we have recruitment head, training officer, performance appraisal officer. Now, training officer is responsible for the training who is working under the HR manager. Similarly, we have the recruitment head
whenever the HR manager is actually following the recruitment process, so recruitment head will be made responsible to follow this process of hiring. Then we have production manager. So production manager ke under we have quality inspector who is responsible to look after the quality, inspect the quality of the products at the production lines. So these are known as the subordinates who are working under the departmental managers, functional managers. Now let's look at the accountability. कि कौन किसको accountable है. तो अगर देखा जाए तो junior management is accountable to the middle management. Middle management is accountable to the senior management. Let's suppose HR manager is accountable to the HR director. But do you think senior management is accountable to anyone? Yes, senior management is accountable to the shareholders. Now, who are known as the shareholders in public limited company? These shareholders have elected the board of directors. When the public limited company holds an election in AGM, annual general meeting on the annual basis, so these shareholders vote for these board of directors. So on the face of these board of directors, the public limited company shareholders have invested, they have bought the shares. So whatever the progress, financial progress, future plans, and whatever the performance of the company is, it will be communicated to the shareholders, and these board of directors are accountable to the shareholders. So this is the case, and these are the different levels of management in an organization. Now heading towards the two individuals. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हूँगा and I'm going to reduce the pace in order to make you understand. It's a critic technical concept ना थोड़ा सा. देखो, we have two individuals. One is known as Henry Fayol and the other one is known as Henry Mintzberg. Henry Fayol, Henry Mintzberg. Now, who are these individuals? These individuals are known as the individuals who have contributed in their management. They are known as the guru of management. Just we have leadership theorists, we have motivational theorists. So these are the individuals of the, or you can say these are the individuals of the management or the guru of management, so-called guru of management. अब हमारे पास, sir, do you think कि इनका नाम याद करना जरूरी है? Yes. देखो, हेनरी फेयोल का नाम याद नहीं रखो, मसला नहीं है. If you do not remember the name of the Henry Fayol, it's not an issue. You can ignore the name of the Henry Fayol. ठीक है? But you have to remember and you have to memorize the name of the Henry Mintzberg. So why it is important to remember and to be familiar with the name of the Henry Mintzberg? Because whenever the examiner asks or assesses this particular topic, so he uses the phrase or the expression that is known as Mintzberg managerial roles. तो वो इस पर्टिकुलर ये जो लास्ट नेम है मिन्सबर्ग, इसको यूज करता है, उसको रेफर करता है इन द क्वेश्चंस. तो इसकी वजह से इसको याद करना जरूरी है. अब से ये दो इंडिविजुअल्स हैं कौन हमारे पास? हेनरी फेयोल बिलोंग्स टू द ओल्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट and Henry Mintzberg belongs to the modern school of management. Now, sir, what is the concept of the old school and the modern school? Let's understand. हमारे पास there is a thought process ना, basically thought process. पुराने ख्याल, old school, old thought process, modern thought process. You all belongs to the Gen Z and the millennial. तो हमारी जो है वो पुरानी जो लोग हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे हमारी सोच डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू देम एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट दैट टाइम डिफरेंट था. अब हमारी सिचुएशन अब डिफरेंट है तो हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. तो हेनरी फेयोल ओल्ड स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब आपके फॉर एग्जांपल योर ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट मेकिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रीक ना. हम यहाँ पे स्ट्रीक मेंटेन करते हैं. इंस्टा रील्स नहीं थी उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी. अब हमारे पास इंस्टा रील्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वी हैव दिस स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड ऑल. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओल्ड स्कूल डिफरेंट होता है, मॉडर्न स्कूल डिफरेंट है. तो ओल्ड स्कूल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी. मॉडर्न स्कूल इसके लिए डिफरेंट है राइट नाउ बिकॉज द सिचुएशन इज डिफरेंट राइट नाउ. तो हेनरी फेयोल बिलोंग्स टू द ओल्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. ही बेसिकली लेड द फाउंडेशन ऑफ द टर्म मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मैनेजमेंट जैसी भी कोई चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हेनरी फेयोल है.
और हेनरी फ्योल ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे द फंक्शंस कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है दे हैव द डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म एंड इफ दे डू नॉट परफॉर्म दीज फंक्शंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव and this particular management is responsible to perform these functions efficiently. So this is the thought process and this is the school of management, old school of management. हेनरी मिंट्सवर्थ मॉडर्न स्कूल क्या है वो हम जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. अभी इन ऑर्डर टू कीप इट क्लियर, इन ऑर्डर टू कीप इट रिफाइंड, हम यहाँ पे हेनरी फ्योल ओल्ड स्कूल पुराने आदमी हैं, उनकी सोच के हिसाब से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. So what are the functions of the Henry Fayol? So let's start with the functions. I'm going to discuss all of the functions of the Henry Fayol regarding the management. Altogether, agar dekha jaye, so we have 5 different functions. 5 different functions hai. So the first function is known as planning. And I'm going to write down the points as well na. कि planning क्या है. देखो हमारे पास according to the functions of management and according to Henry Fayol, planning is the first and the most important function. Everything starts with a plan. For example, if you want to set up a business, so you are going to make a plan and then you are going to execute and then you are going to make a strategy. So planning is the first thing, and planning is the function on which the other functions depend. So planning is known as the first and the most important function in the management functions. अब इन प्लानिंग जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मैनेजमेंट है, अब जो सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, सीनियर मैनेजमेंट इज गोइंग टू सेट ऑब्जेक्टिव्स in the planning phase, and they are going to make the strategy as well that how to achieve the objectives. So simply in this particular case, the senior management is going to decide that what to achieve with this particular business and resources, कि हमें क्या करना है, what to achieve, and the second function is how to achieve. So in the planning phase, the senior management of an organization is going to set the objectives that what to achieve and how to achieve. This is known as one of the function of the senior management in the planning phase. अब जहां पे जब सीनियर मैनेजमेंट व्हाट टू अचीव हाउ टू अचीव करेगी तो दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एज वेल. ठीक है. सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट के हाउ मच अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. If we follow this particular plan or if we make an investment, and what would be the outcome and the revenue or the further returns if we made this particular investment or if we follow this particular strategy. So it's also the part of the planning. So when you are making a plan, so you are going to calculate the estimated cost and you are going to calculate the estimated revenue as well. तो ये हमारे पास प्लानिंग है. अब जब हमारे पास प्लानिंग का फेज होता है, कंटिन्यूएशन के अंदर इसी चीज को समझते हैं कि प्लानिंग हाईलाइट्स the issues and the problems during the strategy. कि when the business follows the strategy, तो at that point कि क्या क्या issues and क्या क्या problems आ सकते हैं, वो भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, highlight हो जाएंगे. कि this particular thing can be a problem, amount of competition, legal barriers, economic conditions, or the customer's resistance and all. So whatever the issues and problems, it will be highlighted. तो जब वो problems highlight हो जाएंगे तो automatically हमारे पास यहाँ पे risk जो होगा वो minimize हो जाएगा, because we know that these are the issues and the plans, or these are the issues and the problems that might be faced by the business. So in that case, in planning, the senior management is also going to plan for the contingency. Now what is contingency? What if plan A fails? So we have the plan B as well. Objective to change nahi hoga. The management is not going to change the objective. The management is going to set an objective and it will be same. We are going to change the strategy. Let's suppose you are driving a car in a particular direction. You want to reach a specific location or the destination. You are driving that car. Road block hai. That is a road block. So what would you do? घर चले आओगे? नहीं. You are going to take an alternate route. तो objective change हुआ, destination change हुई, location change हुई. No, you have changed the route or you have changed the strategy.
So that is known as planning B. So in planning phase, the organization's management plans for the plan B as well. That is known as contingency planning. In case what if plan A fails, so we have the plan B to execute and we have plan B to achieve the objective. Let's take an example. For example, हमारे पास एक particular we have a Norwegian company जो कि एक particular telecom company and the business is operating in Norway only. The senior management plans for the expansion. The expansion is known as an objective that they have set to achieve over a period of time. Expansion is the objective. They want to expand their operations. तो उन्होंने यहाँ पे specifically option choose किया Asian market, or specifically in Asian market where to expand India. Why India? Because of the research. India is a growing, developing economy. Population बढ़ रही है, developing economy. People are getting smartphones, and the requirement for the telecom will increase. So it's a potential market to enter. So according to the strategy, Asian market के अंदर India is the most suitable market. ठीक है. So Norway has set a plan. Norway has set an objective. Norway, this particular company has set the strategy as well. But when they were making the plan, they highlighted an issue, that is the local competition with Reliance, Ambani's Geo network हमारे पास GIO. So in that case, they highlighted कि what if we failed to enter, or what if the government didn't allow us, or what if we fail to get the legal documents and the legal requirements or the formalities. So what? So they plan for the second thing, that is plan B. If we fail to enter into Indian market, so Pakistan is an option. And in actual हुआ ये कि now they are operating in Pakistan by the name of Telenor. So Telenor is known as one of the telecom company that is operating in Pakistan, because this company failed to enter into India. Okay, and they were entering into the India by the name of Uninor. In Pakistan, they are operating by the name of Telenor. So this is what planning is. Okay, in case if you fail to achieve the objective through plan A, so you have to make a contingency plan. Okay, what if plan A fails? So we have the plan B to minimize the risk of failure. This is known as first of the one of the function of the management. The second function is known as organizing. Now, after the strategy making and after making a plan, you have to follow the strategy. And in order to follow this strategy, resources are required. Now, what type of the resources? Resources, human resource, that means labor, skills that are required. And number two, all the non-human resources that are also required. Non-human resources include technology, finance, amount of capital. So the management is actually responsible for the organizing of resources. So in this case, the management is going to gather, the management is going to arrange, or simply the management is going to organize the human and the non-human resources that are required. Okay, let's suppose this is the amount of finance that we need. So the finance management is going to arrange the finance through issue of shares, bank loan and all. The HR department is going to make the organization structure in that country कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करेंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को हायर करेंगे. So whatever the resources that are required, management is responsible to organize the resources, because planning is done. We have set an objective. We have made a strategy. We have a complete plan to follow. Now, in order to put that particular strategy into effect, or in order to follow the strategy, we need the resources. So the management is going to organize whatever the human and non-human resources that are required. So again, it's a function of the management. Okay, whenever the strategy or the business activity or any particular product or project development is there, the resources are required, the management will be responsible to organize the resources. तो सिंपली मैनेजमेंट ही अरेंज करेगी, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन, फाइनेंस सारी की सारी. अब यहाँ पे व्हेन दी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो नहीं होगा. वी नीड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज. हमें फाइनेंस भी रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे ऑपरेशन फैसिलिटीज भी रिक्वायर्ड है, हमें प्रोडक्शन प्लांट्स भी रिक्वायर्ड है, हमें लेबर भी रिक्वायर्ड है.
तो यहाँ पे द थर्ड फंक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग? Coordinating is to become the bridge. The management is going to become the bridge between the different departments so that all the resources can be arranged. Let's take an example. Let's suppose हमारे पास coordinating क्या है, coordinating होता क्या है in actually हमारे पास. आज जो example लेते हैं. Let's suppose this is a particular rectangle और हमारे पास कितने corners हैं? 4 corners हैं. और हमारे पास departments भी business में कितने होते हैं? One human resource department, finance department, marketing department, or you can say operations or the production department. तो ऑल टुगेदर वी हैव 4 डिपार्टमेंट्स. ये 4 फंक्शंस भी होते हैं, 4 डिपार्टमेंट्स भी होते हैं. अब लेट्स सपोज देयर इज अ केस बिजनेस इज डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट. देयर इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव एक्सपैंड करना है तो कंपनी ने यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू डेवलप द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एज वेल. हम नॉर्मल फ्यूल कार्स बनाते हैं, हम हाइब्रिड कार्स बनाते हैं, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाएंगे. तो क्या इंडस्ट्री चेंज हो रही है? नो, मार्केट सेम है. दे वर डेवलपिंग कार्स, दे आर डेवलपिंग कार्स, बट द टेक्नोलॉजी इज न्यू एंड दे आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग द न्यू रेंज ऑफ कार्स दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि पहले ऑफर नहीं करते थे. अब मुझे एक बात बताएं, प्रोडक्शन कौन करेगा? ये डिपार्टमेंट. लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द आइडिया, इज गोइंग टू गिव द फिजिकल एग्जिस्टेंस टू द आइडिया. आइडिया कहां से आएगा? मार्केट रिसर्च से. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द रिसर्च. मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिसर्च करेगा, जनरेशन ऑफ आइडियाज होंगे, चाहे वो कोई भी सोर्स हो. So marketing department is going to do the research and the marketing department is going to come up with the idea. And it can be through internal sources, external sources, whatever the sources are. Marketing department is responsible for the generation of ideas. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन आइडियाज को लेके जाएगा किसके पास? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू गिव द फिजिकल एग्जिस्टेंस टू दैट आइडिया. मतलब आइडिया जो है वो तो कॉन्सेप्ट है ना, एक, उसकी कोई रियलिटी या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा ये एक चीज होनी चाहिए. इट्स एन आइडिया, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन द माइंड. तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, रिसोर्सेज को यूज करके उस आइडिया को फिजिकल एग्जिस्टेंस देगा और एक नया प्रोडक्ट डेवलप करेगा. लेकिन नो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट दैट मच सेल्फ सफिशिएंट. वो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास इन ऑर्डर टू गेट द फाइनेंस, कि मुझे यहाँ पे फाइनेंस चाहिए, मुझे यहाँ पे आई नीड अमाउंट ऑफ मनी टू गिव द फिजिकल एग्जिस्टेंस और टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट. And the operation is going to coordinate with the HR as well to get the workforce, to get the skills of the workforce, ताकि एक टीम के अंदर काम हो सके. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? उसके बाद जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा तो अगेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व इन दी क्या कहते हैं हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, campaigning and all, so that the sales can be made. So you can see that all the departments are coordinating and they are communicating effectively to carry out the business activity, to carry out the specific project development or product development. So it is very clear that management is going to become the bridge. In different departments के बीच में जो coordination होगी वो कौन करवाएगी? Management करवाएगी. The departmental managers or the management of the different departments are going to coordinate so that the resources can be arranged and the resources can be gathered or collected together. Now, additional one thing that we need to understand, one more thing that we need to understand is कि हमारे पास coordinating, effective coordination and communication reduces the chances of errors and the duplication of task. Now, sir, what is chances of errors and duplication of task? It's all because of the lack of coordination and communication. Let's suppose हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं to understand. हमारे पास Toyota is a particular company and it has two different products.
Toyota Aqua is one of the car of the Toyota company, and the other one is known as Prius. Okay, these are the two products of the Toyota company. Aqua is doing a research on fuel efficiency, and the Prius is also doing the research on the fuel efficiency. तो सर ये दोनों क्यों कर रहे हैं जब दोनों सेम कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं? यस, ये हो रहा है बिकॉज इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है. Aqua and Prius both belongs to the same company and they are doing the separate researches on the same thing. अगर डिफरेंट चीजों पे रिसर्च कर रहे होते तो समझ में आता था कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है ऑफ डूइंग द रिसर्च, बट इवेंचुअली दे आर इन्वॉल्व इन द same research and they are actually researching on the same thing, and this is due to the lack of communication and the coordination. तो अब हो क्या रहा है कि एक्वा जो रिसर्च कर रहा है उसकी कॉस्ट अलग लग रही है, प्रियस जो रिसर्च कर रहा है उसकी कॉस्ट अलग लग रही है. अब लेट्स सपोज दे आर टू गाइस एंड दे वांट टू गेट इनटू द सेम लोकेशन, तो व्हाट इफ दे शेयर द राइड, तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी ना और दोनों अपने ऑब्जेक्टिव्स पे भी पहुंच जाएंगे. तो यहाँ पे जब हमारे पास लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है कि लेट्स सपोज देयर आर टू इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर द परचेजेस ऑफ द मटेरियल, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वो भी मटेरियल खरीद लेता है या वो भी मटेरियल खरीद लेता है, तो अब हमारे पास ज्यादा स्टॉक हो गया है जबकि रिक्वायर्ड इतना नहीं है. तो दिस इज ऑल ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो ये डुप्लीकेशन ऑफ टास्क एंड एरर्स है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है. अगर कोऑर्डिनेशन होगी हमारे पास तो आपके पास ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एरर्स और डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होंगे. एंड हु इज रिस्पांसिबल? मैनेजमेंट. तो अगर हमारे पास प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन है तो चांसेस ऑफ एरर्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ टास्क भी नहीं होंगे. अगेन इट्स वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. एंड हु इज रिस्पांसिबल? मैनेजमेंट. फर्दर हमारे पास फोर्थ फंक्शन है दैट इज नोन एज स्टाफिंग, for which the management is responsible. अब staffing is comprised of three things. Management passes the orders and commands to the workers to perform, or the management assigns the task to the workers to perform. Second, the management provides the direction to the workers that this is how you have to perform the task and this is when till you have to complete the task. And in order to perform the task, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एज वेल. तो वर्कर्स को क्या काम करना है, कैसे करना है, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू पास ऑर्डर्स एंड कमांड्स कि ये काम करना है. अब लेट्स सपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज असाइंस द टास्क टू द टीचर्स ना, वो उनको कहते हैं कि यार आपको ये काम करना है. ठीक है, और इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है हमारे पास कि let's suppose exam seasons are going on, so the management is going to pass me a thing or is going to assign me a task that you have to make a paper for your students. So they have passed me the command. Directing, it means providing the actions कि इतने टाइम ड्यूरेशन का इतने मार्क्स का टास्क होगा और इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इतने मार्क्स का आपका पेपर होगा. दैट इज प्रोवाइडिंग द डायरेक्शंस. And in order to motivate the workers when they are feeling low, when they are facing the productivity issues, so management is going to use the reward system. Now what is reward system? Reward system का मतलब है हमारे पास financial rewards, non-financial rewards, bonus, commission, appreciation, promotion, increment in the salary. These are known as the financial and the non-financial rewards. So staffing, it means passing orders and commands, providing the actions and directions to the workers, and in order to keep the workers' performance intact or in order to boost the performance, that is motivation, the responsibilities of the management. ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो. क्योंकि अगर वर्कर्स एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, प्रोडक्टिविटी के साथ टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. इज इट क्लियर गाइस? Now the fifth function is controlling. Now sir, what is controlling? Controlling is to monitor, is to analyze and to evaluate the performance. The management of an organization is going to monitor, analyze and to evaluate. अब हमारे पास who is going to keep the control on the workers' performance? The management.
Then the management follows the actions ना, कि किसको प्रमोट करना है, किसको फायर करना है, किसको इंक्रीमेंट देना है, ये सब कुछ है. तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? लेट्स सपोज व्हेन यू लुक एट द रिपोर्ट कार्ड्स एंड द रिजल्ट कार्ड ऑफ योर स्कूल और द कॉलेजेस, तो उसके अंदर आपके बिहेवियर, अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, असेसमेंट मार्क्स, नंबर ऑफ असाइनमेंट, ये सारी की सारी चीजों की एनालिसिस होती है, एंड देन दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट कि ओवरऑल आपका ग्रेड ये है, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस ये है. So in the organization, the management follows the same process as well. They monitor, they analyze, and then they evaluate. तो जब evaluate करते हैं तो evaluation हमारे पास जब होती है तो we have two different individuals. One who are known as the performers, and who are the performers जो standards को meet करते हैं, targets को meet करते हैं, and they operate and they perform according to the standard and the targets of an organization. तो जो performers हैं, the organization is going to reward them. क्योंकि यहाँ पे उन्हें मोटिवेट किया गया था, एंड इट वाज एन इंसेंटिव, प्रॉमिस ऑफ गिविंग द रिवॉर्ड, कि उनको मोटिवेट इस चीज के लिए किया गया था ना. तो अब जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो नाउ दे डिजर्व द रिवॉर्ड. तो रिवॉर्ड के अंदर दे कैन यूज बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, appreciation, increment in the salary, different. तो हम मोटिवेशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर्स. बट यहाँ पे बस समझ लें हमारे पास कि दोज हु आर गोइंग टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू रिवॉर्ड देम बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन दे हैव परफॉर्म्ड वेल, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड द मॉनिटरिंग दे हैव परफॉर्म्ड वेल. और जो सेकंड ग्रुप होगा हमारे पास वो कौन सा होगा? जो कि अंडर परफॉर्मर्स होंगे. And those who are underperforming, the organization is going to follow the process of warning. The organization is going to follow the process of training so that the workers' performance can be restored. अब वो बच्चे या वो सॉरी वो इंडिविजुअल्स, वो एम्प्लॉयज जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हाउ द परफॉर्मेंस विल बी कंट्रोल्ड and how the organization is going to restore their performance. So organization is going to use the warning system, or the organization is going to train them, or the organization is going to use different financial factors in order to identify the needs so that they can be motivated. So basically the management is responsible for the control, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो. अब यहाँ पे एक चीज समझ लिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ, दैट इज नोन एज द रिपोर्ट्स. जब हम यहाँ पे इवैल्यूएशन कंप्लीट करते हैं, जैसे आपके पास आपकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन कंप्लीट होती है इन द स्कूल एंड कॉलेजेस, सो द कॉलेजेस और द इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द रिपोर्ट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिपेयर्स द रिपोर्ट्स. तीन टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं. वन इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट which shows the financial performance and the worth of the business, कि थ्रू आउट द ईयर बिजनेस की ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, ये एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू, ये प्रॉफिटेबिलिटी है. सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स, जो कि हमने समझा है यूनिट 1 के अंदर व्हेन वी वर स्टडिंग CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. तो दे आल्सो प्रिपेयर द कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स कि हाउ मच सोशली रिस्पांसिबल दे वर थ्रू आउट द ईयर, कितना एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया, कितनी पॉल्यूशन को कम किया, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, कितनी सोशल वेलफेयर करी वो. एंड इसके बाद हमारे पास थर्ड वन दैट इज नोन एज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, जिसकी बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन परफॉर्मर्स हैं और कौन अंडर परफॉर्मर्स हैं. तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस, regularity, punctuality, achieving the target standards, productivity levels, and all. So these are the different reports that are prepared according to the organization when they are in the controlling phase, and they are responsible to control the resources. Otherwise, resources waste ho jayenge and the organization cannot achieve its objective. Now, the last thing that you need to understand is जो हेनरी फयोल है हमारे पास, an individual who is known as Henry Fayol, who has introduced the functions of management. There are 5 functions of the management for which the management of an organization is responsible, and they should perform these functions effectively. Has said कि ये जो हमारे पास functions हैं ये different levels पे perform किए जाएंगे. जैसे for example, it is clearly mentioned that planning is done by the senior management. Then the organizing and controlling will be done by the middle management. Coordination, organizing, controlling, and the performance of staffing and directing
कि यहाँ पे ये जो जूनियर मैनेजमेंट होगी वो वर्कर्स को यहाँ पे डायरेक्शंस और प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दे आर अंडर द मैनेजर। तो मैनेजर डिसीजन लेगा और फिर ये जो हमारे पास सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स हैं, दे आर गोइंग टू फॉलो द एक्शंस और वर्कर्स से भी काम करवाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे। सो ओवरऑल टू कंक्लूड इज दैट, कंक्लूजन इज दैट कि ये जो डिफरेंट फंक्शंस है ये डिफरेंट लेवल्स पे परफॉर्म करेंगे। जैसे सीनियर मैनेजमेंट इज गोइंग टू परफॉर्म द प्लानिंग, organizing, controlling, and हमारे पास coordinating is responsibility of the middle management, and the junior management is involved in the staffing. So ऐसा नहीं है हमारे पास कि ये फंक्शन सिर्फ एक जगह पे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, एंड वी आर डन विद इट। थैंक यू।